This video is for informational purposes only, based on personal research, and should not be considered as financial advice. It does not constitute any recommendation to buy, sell or hold any securities. Viewers are advised to conduct their own research. Hello friends, fellow traders and investors. Namaskar दोस्तों, very warm welcome to Nifty Quick Update with SD. मैं हूं SD, Shanando Das, your friend and guide to the global markets. Before we start करने से पहले चलिए थोड़ा let me take you to my website, give you an update कि this Thursday, this is my live market talk. हफ्ते में एक बार हम लोग बैठ रहे हैं. We are sitting together to discuss the overall market condition, looking at different markets beyond Nifty, almost the full global markets, top-down approach to the sectors. So friends, this week I'm going to hold this live market talk on Thursday, 8 p.m. So I'm looking forward to see you all on Thursday. And you can access all the previous episodes from my YouTube or from this website. Joining of the session is completely free, but the recording is not. Recording will only be available for YouTube members. And keep a regular check under offerings to know about different types of free sessions that I hold. That recently we concluded our option workshop January 2026 with 5 classes, no charges, with an aim to improve the working knowledge on options for new beginners and also for Rainbow members, because we have beautiful option master tool, but we don't cover option basics in the Rainbow. So Rainbow members भी join कर पाए option workshop to improve their knowledge as we in the Rainbow journey stick to the plan, don't go to the basics. So now let's go to friends की market का discussion में चलते हैं. चलिए फर्स्ट हम लोग वीकली चार्ट से चालू करेंगे एंड पहले देखेंगे I'll come to निफ्टी बट थोड़ा सेक्टर्स पहले. इन दिस बाउंस बैक जो चालू हुआ है विद द ट्रेड एग्रीमेंट, फिर ट्रेड एग्रीमेंट के ऊपर फर्दर पॉजिटिव कमेंटरीज, पॉजिटिव न्यूज, मोर राइटिंग में आ रहा है, लीगली आई थिंक बाइंडिंग हो रहा है ट्रेड एग्रीमेंट, जो एक पॉजिटिव इंपैक्ट दिया है अक्रॉस द मार्केट सेगमेंट. मेजॉरिटी ऑफ द मार्केट सेगमेंट टर्न्ड स्ट्रॉन्ग. Buy trade win probability remains 61%. प्राइस एक्शन थोड़ा मिक्स्ड है, थोड़ा बुल एंड बियर का फाइट चल रहा है. बट कैंडल का कलर पोर्शन देखिए, मेजॉरिटी ग्रीन हो चुका है इन द कैंडल. दैट मींस प्राइस एक्शन का कंट्रोल धीरे धीरे बुल्स के हाथ में जा रहा है इन द वीकली चार्ट. मेन जो रेजिस्टेंस है ऑन द अपसाइड, दैट इज 26,200 to 300 एरिया. अब क्वेश्चन रहेगा आने वाले weeks and months में, can Nifty cross above this 26,300, then a new all-time high can be reached and further bullishness can come up. So even though this I've highlighted, I strongly expect that this is the late part of the business cycle. एक recession आने का chance remains significantly high, but that does not mean I'll continue just jump on to sell the market. मुझे यहाँ पे strong signal चाहिए to short the market. So overall, I can see strong comeback across the segment rising in the weekly chart. थोड़ा daily chart को देखते हैं. That's the beauty of using this, कि हम लोग different time frame में देख सकते हैं कहाँ पे strength है. So majority of the segment is showing strength. कुछ segments still not recovered fully like consumption, but majority of the segment is strong. And कहाँ पे सबसे ज्यादा gain दिख रहा है? Nifty 50, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स एंड ऑटो में बहुत ही स्ट्रॉन्ग कमबैक हुआ इन द डेली. ये थोड़ा वीकनेस दिखा रहा था, बट नाउ इट इज वंस अगेन स्ट्रॉन्ग. सो देखना होगा विच आर द, इफ देयर आर एनी न्यू स्टॉक्स विच आर शोइंग बैक स्ट्रेंथ. अब थोड़ा हम लोग 125 मिनट्स में जाके देखेंगे दोस्तों कि किसमें स्ट्रेंथ है. ऑलमोस्ट ऑल द सेगमेंट. सो ये ब्रॉड बेस्ड बुलिशनेस दिख रहा है फ्रेंड्स. ब्रॉड बेस्ड, वेरी ब्रॉड बेस्ड, मतलब चारों तरफ बुलिशनेस दिख रहा है. No particular segment which is standing out. This is quite significant. And मुझे तो लग रहा है देख के चार्ट को देख के, it is soon will be testing the 26,050 to 100 का जो मेन रेजिस्टेंस है उसको टेस्ट करना चालू कर देगा निफ्टी.
एंड दैट विल डिसाइड कि फर्दर बुलिशनेस आएगा या फर्दर कंसोलिडेशन विल बी देयर. नाउ लेट मी लुक एट कि और भी डिटेल में सेगमेंट में डिफरेंट सेगमेंट को देख रहे हैं वीकली चार्ट में. हियर थोड़ा डिफरेंस है. एक पॉइंट टू बी हाईलाइटेड इज द आईटी. आईटी segment is not recovering. FMCG rising but still notably strong. No, sorry, notably weak है ये. एनर्जी काफी स्ट्रॉन्ग सेगमेंट रहा विच इज स्टिल शोइंग स्ट्रेंथ बट नॉट सिग्निफिकेंट राइज नहीं दिख रहा है. बैक ब्रैकेट में दिखा रहा है राइज इन स्ट्रेंथ. स्ट्रेंथ में सबसे ज्यादा राइज होते हुए दिख रहा है इन द मीडिया इन द वीकली चार्ट. Media, realty, healthcare, these have bounced back strongly. Strength increase significant, especially in the media area. So I hope आप deep down करेंगे further to look where is the strength is coming from. Let's look at through the daily chart. Daily chart में is this a broad based? One segment is struggling, that is the IT. IT is still the weak segment in the daily chart. Majority of the other segments are coming super strong. So energy, FMCG, energy तो strong था ही और साथ में और strong. सबसे ज्यादा strength increase होते हुए दिख रहा है मुझे मीडिया. आईटी में भी रिलेटिव स्ट्रेंथ इंक्रीज हुआ है. ब्रैकेट में दिखा रहा है 2.5 विच इज नोटेबल बट द ओवरऑल स्ट्रेंथ इज फॉलिंग स्टिल इन द डेली चार्ट. सो ब्रॉड बेस्ड तो है, कुछ पर्टिकुलर सेगमेंट में वीकनेस दिख रहा है अभी भी. वन ऑफ देम लीडर इज द आईटी. सो लेट्स लुक एट द 2 आवर चार्ट और सॉरी 125 मिनट्स चार्ट विच विल कंप्लीट द कैंडल. तो 125 मिनट्स में आईटी इज राइजिंग बट इट इज ऑफ कोर्स द वीकेस्ट ऑफ द सेगमेंट. एंड 2 आवर चार्ट में सुपर स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ जो दिखा है दैट इज द प्राइवेट बैंक होते हुए. अदर सेगमेंट्स आर स्लाइटली वीक इन द 2 आवर. तो एक शॉर्ट टर्म में करेक्शन होते हुए दिख रहा है बट ओवरऑल आई कैन सी द ब्रॉड बेस्ड स्ट्रेंथ इन द मार्केट. सो इट हैज टर्न नोटेबली बुलिश. ये ट्रेड एग्रीमेंट इज गिविंग इट्स पॉजिटिव वाइब्स इन द मार्केट. लॉट ऑफ बाइंग फ्रॉम द डीआईआई एज वेल. सो ओवरऑल एक बुलिश माहौल है चारों तरफ. अब थोड़ा निफ्टी का डिटेल एनालिटिक्स में चलते हैं. चलिए अब हम लोग निफ्टी का चार्ट देख रहे हैं. वीकली चार्ट वी हैव सीन प्राइस एक्शन अभी भी बुलिश नहीं बट बायर्स का विन प्रोबेबिलिटी 61%. कंसोलिडेशन चांस 36 मतलब बुलिश रेंज काइंड ऑफ मार्केट है वीकली में. सो ओवरऑल एक बुलिश आउट ऑफ माय 12 फैक्टर सेटअप 7 बुलिश 3 बियरिश एंड 2 न्यूट्रल इन द वीकली चार्ट. डेली चार्ट में देखते हैं क्या सिचुएशन है, प्रोबेबिलिटी क्या बता रहा है विन का. सो डेली चार्ट इट्स थोड़ा मिक्स्ड है. बाय सेल एंड कंसोलिडेशन ऑलमोस्ट सिमिलर. तो थोड़ा रेंज बाउंड होने का अभी भी चांस है इन द डेली चार्ट बट ओवरऑल कैंडल हैज मूव्ड अबव दिस लाइन. मिन स्टॉप हैज मूव. सो ओवरऑल यहां पे भी एक बुलिश माहौल होते हुए दिख रहा है. आउट ऑफ माय 12 फैक्टर सेटअप हियर 9 इज बुलिश, 1 is bearish and 2 neutral. So bullish है बट बहुत एग्रेसिव बुल नहीं है इमीडिएटली बट धीरे धीरे आई थिंक राइज जैसा करंट राइजिंग हो रहा है तो लग रहा है धीरे धीरे राइजिंग इज वेरी लाइकली. डेली चार्ट के हिसाब से मेन जो रेजिस्टेंस एरिया होगा दैट इज अराउंड दैट 300 लेवल जहां पे वो ट्रेड एग्रीमेंट के दिन खुला एंड फॉर द ड्रॉप लोअर साइड सपोर्ट बन जाएगा अराउंड 25,660 एंड एक्सट्रीम लोअर सपोर्ट 25,300. अब थोड़ा 125 मिनट्स चार्ट में चलते हैं दोस्तों और या 2 आवर में भी हम लोग देख सकते हैं. 125 मिनट्स चार्ट बुलिश, 10 फैक्टर्स बुलिश आउट ऑफ 12, 1 बियरिश एंड 1 न्यूट्रल. तो इसमें हम लोग 125 मिनट्स में थोड़ा ऑप्शन मास्टर टूल को अप्लाई करके देखते हैं कि ऑप्शन मार्केट का क्या रीडिंग्स आ रहा है. बुल पुट स्प्रेड एंड बुल कॉल स्प्रेड यही सिग्नल्स चलते आ रहा है फॉर काफी टाइम से. इवन जब फुल रेड कैंडल था तभी भी बुल पुट सिग्नल ही चल रहा था एंड इट वर्कड. सो फार एक बुलिश जैसा हम लोग डिस्कस कि एक बुलिश माहौल है. सो डिफेंसिव साइड बुल पुट स्प्रेड सिम्स टू बी गुड ट्रेड्स. एंड इसके साथ साथ मैं रीडिंग लेना चाहूंगा फ्रॉम डायरेक्ट ऑप्शन प्रीमियम मार्केट. तो इसके लिए थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा. लेट्स मेक इट 17th
of February 2026, and let's make it correct at the money 26,000. और देखते हैं ऑप्शन प्रीमियम मार्केट से 17 फरवरी के लिए कौन सा सिग्नल है करंटली, विच हैज हायर चांस बुल कॉल स्प्रेड. इंटरेस्टिंग. सो एग्रेसिव बुलिश. लेट मी मेक दिस बिगर. इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं सो यू ऑल कैन सी. सो बुल कॉल स्प्रेड दिख रहा है यहाँ पे, विच इज सीम्स टू बी ऑफ हायर चांस, बट ये मीटर डायनामिक है. सो इसको रेगुलर फॉलो करना चाहिए. दोज हु आर रेनबो मेंबर्स, यू शुड कीप दिस वॉच ऑन दिस. दिस गिव्स अ फेयर आइडिया. बुल कॉल लैडर यानी बुलिश बट रेंजिश स्ट्रेटेजी भी प्रेफर्ड है, बिकॉज लॉट ऑफ रेजिस्टेंस है ऑन द अपसाइड. बुल पुट स्प्रेड विच इज बुलिश एंड डिफेंसिव स्ट्रेटेजी. बियर पुट बिल्कुल नहीं, मतलब बियरिश. बट बियर पुट लैडर है, मतलब थोड़ा बहुत करेक्शन हो सकता है, बट बहुत लिमिटेड करेक्शन का चांस दिख रहा है. एंड बियर कॉल स्प्रेड का जीतने का चांस रिमेन्स लो, मतलब कॉल बेचना इस टाइम पे उतना सही नहीं रहेगा. एंड बुल ट्रेड विन प्रोबेबिलिटी 2 आवर में दिखा रहा है 79%, सिग्निफिकेंटली हाई फ्रेंड्स. सो ओवरऑल दिस इज द सिग्नल फ्रॉम द स्ट्रेटेजी मीटर. आज का जो एक्सपायरी है उसको भी थोड़ा देख लेते हैं. दो ट्रेडिंग ऑन द एक्सपायरी डे इज नॉट रियली माय फेवरेट. यहाँ पे बुल कॉल स्प्रेड उतना एग्रेसिव नहीं. इंटरेस्टिंग. आज उतना बुल कॉल स्प्रेड एग्रेसिव जीतने का 17 को था. बुल कॉल लैडर इन बियर पुट लैडर, इनफैक्ट आज बियर कॉल का भी जीतने का चांस है. सो इट्स आज के लिए लग रहा है कि मोर रेंजिश रहेगा एंड फर्दर बुलिशनेस लग रहा है बिफोर 17th एज पर द ऑप्शन प्रीमियम मार्केट ट्रेडिंग. सो ऑल इन ऑल फ्रेंड्स, एक ओवरऑल एक बुलिश माहौल छाया हुआ है. बट आई होप आप ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग रिस्पॉन्सिबली करेंगे. कोई भी मेरा डिस्कशन ट्रेड सजेशन नहीं है, because I believe strongly in risk management rule number 1. You should never listen to others and trade and jump, and listen to others jump on a trading or investment decisions. मेरे वीडियो सुनने से अगर आपको हेल्प हो रहा है, गाइडेंस मिल रहा है, देन इट्स ग्रेट. बट ट्रेड एज पर योर ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग फिलोसॉफी, प्रिंसिपल्स एंड प्लान. So that's all, friends, on the Nifty from my side. Best wishes to you, all of you. Thanks for watching this video. Pasand aaya to don't forget to give a thumbs up. And as always, happy trading, happy investing.